कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। ये बहुत ही बेनिफिशियल कैंपेन है आई एग्जाम भी ने जो लीड किया है। एंड इसी के साथ मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिबेटेबल टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज प्रेसिडेंट जस्ट अ रबर स्टैम्प? This is a topic from constitutional law and holds a lot of relevance not only for competitive examinations but also for legal current affairs. So ये concept को clear कर लीजिए इस वीडियो के साथ बहुत ही सरल तरीके से. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and get all such kind of beneficial videos at iExamB. So once again, welcome to iExamB, and also if you are having any queries, you can write to us at hello@iexamb.com. अगर आपको कोई कंसेप्ट पर वीडियो की आवश्यकता है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कोई क्वेरीज हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बैंकिंग एग्जामिनेशंस के बारे में गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पर सीधा कॉल करके अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो विजिट www.iexamb.com for all the updates and courses that are available at iExamB. And also let me tell you one more thing, that iExamB is the only platform where you will find mock tests at zero cost. So mock tests को practice करने की एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने. So do visit the website and take benefit of all such kind of things. Is president just a rubber stamp? This is a very important question in our Indian scenario. अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसए, वहाँ पर प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बट यहाँ पर हमारे पास एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. वी हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड वी हैव द प्राइम मिनिस्टर. सो इनके रहते हुए प्रेसिडेंट का इंडिया में क्या रोल है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, एंड देन वी विल आंसर द क्वेश्चन वेदर ही इज एक्टिंग जस्ट एज अ रबर स्टैम्प और नॉट. So the president, I would say, is actually a very important position that is held in Indian constitution, Indian history में भी अगर आप देखें, या अगर आप current situation भी देखें. It is not merely a rubber stamp, this is what I feel. But इसके लिए थोड़ा सा हम past history में चले जाते हैं. In the words of Dr. B.R. Ambedkar, the father of our Indian constitution, the chief member of the drafting assembly, he has mentioned about the president that under the Indian constitution, president occupies the same position as the king in the English constitution. So this is how he has mentioned about the president, that जो position है president की वो एक nominal position है. He is a nominal figurehead. His powers and discretion is very limited in nature. एडमिनिस्ट्रेटिवली उसका जो डिस्क्रिशन है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो एक्चुअली रेस्ट करता है काउंसिल मिनिस्टर्स में और प्राइम मिनिस्टर में. ही इज एक्चुअली वॉइसिंग देयर डिसीजंस. सो दैट्स व्हाई पीपल कॉल इट एज ही इज एक्टिंग एज अ रबर स्टैम्प. बट ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों नहीं है ये हम लोग देखेंगे. वी कैन नॉट कॉल इट एज दैट प्रेसिडेंट इज एक्टिंग अ रबर स्टैम्प. द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस बीइंग दैट he is constitutional position, he is holding a constitutional position of the country. He is leading the country, he is the head of the union executive, and various other reasons that will answer this particular question. Head of the union executive का article है 53. article 53 का clause 1 देख लेते हैं. That is talking about the executive power of the union shall be vested in the president. So the entire executive power will rest in him, and it shall be exercised by him either directly or through officers that are subordinate to him. This is what is his chief function, that he will be exercising his discretion and he will be acting. He is actually exercising discretion in a very limited manner.
ऐसा नहीं कि कुछ भी डिस्क्रिशन नहीं है. अगर हम एग्जाम्पल देखें इमरजेंसी का, emergency में you can see that there is amount of discretion that rests with the president if the president is satisfied. ये words use किए गए हैं emergency provisions में. So the president is having some amount of discretion, recommendations are forwarded to him, and his discretion again is reflected that he has been enshrouded with responsibility that he has to act in accordance with the constitution. अगर आप oath taking ceremony देखोगे, president जब oath लेता है तो उसकी जो ओथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है दैट ही हैज टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो प्रेसिडेंट होल्ड करता है, तो इसे हम रबर स्टैम्प का नाम नहीं दे सकते. ही इज हैविंग हिज ओन ड्यूटीज एंड ही इज ऑल्सो कैरिंग आउट मेनी अपॉइंटमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, though he is acting at the recommendations of the councils of ministers. But again I will tell you one thing over here. He can disagree with the decision of the Council of Ministers. He can caution them. He can advise them. He has the power to disagree. Even if he sends the bill for reconsideration and अगर वो कि बिना किसी changes के वापस आ जाता है, he does not have power at that particular time. He has to put his seal on that. But before that, the power that he has in his hand, that is to disagree, is not something which is less. ये कोई छोटा मोटा power नहीं है. He is having the power to disagree. He is having the power to influence the ministers. Being the head, he is having that powers with him. So हम ये नहीं कह सकते that he is just a puppet. He is a rubber stamp. He is applying his mind somewhere or the other as per constitution. So this argument fails over here, and the argument that is in favor of the president being a constitutional position is that he is holding many responsibilities, and this is what is the most important part. So article 53 को आप इससे link कर सकते हैं. Another important aspect is indirect election of the president. पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स अगर आपने देखे होंगे तो उसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ था अबाउट वेदर प्रेसिडेंट हैज़ टू बी अ डायरेक्टली इलेक्टेड वन और एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड वन. So final decision was that the president will be indirectly elected. We have a democratic country, and here voice of the people has been reflected in the indirect election of the president as well. Article 54 अगर आप रेफर करते हो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा इलेक्शन का, and how the people's voice has been represented in the election of the president. That also you will understand. Though it is not a direct election, but that does not mean that the president is not having any powers or the president is not acting on his own. He is being elected by the people. So the representation by people is there. Population is a very important factor in his election. You can note down this particular position. जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें रिप्रेजेंटेशन जो है पॉपुलेशन का सेंसस ध्यान में रख के डिसाइड किया जाता है. रिमेंबर दैट. फॉर दैट एवरी टाइम सेंसस इज कंडक्टेड and that is what is how the voice of the people is reflected in the votes of the members of the parliament, members of the state legislature. तो ये indirect election है लेकिन इनके वोट्स में people को represent किया गया है. So this is how democratically all these provisions are protecting his sanctity, I would say, and he is acting as a protector of the constitution, as a defender of the constitution. इसके अलावा और काफ़ी illustrations मैं आपको दे सकती हूँ. emergency का दिया है, and इसके अलावा आप अगर कोई पोजीशन चेक करते हैं, कोई सिचुएशन चेक करते हैं, आपको ऐसे कई सिचुएशन और इंस्टेंसेस मिलेंगे. अपॉइंटमेंट्स का तो हमने डिस्कस किया ही है, फाइनेंस कमीशन के बारे में हमने डिस्कस किया है, और प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको प्रोटेक्ट करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 78. ये प्राइम मिनिस्टर को ड्यूटी देता है दैट ही हैज़ टू कम्युनिकेट एवरीथिंग to the president, discuss with him, and if the president calls upon for certain things that are taking place in the parliament, prime minister has a duty to reply to it. He has to provide that information to the president. So article 78 एक बहुत ही important example हो गया यहाँ पे. ऐसे आपको कई instances मिलेंगे president के sanctity को protect करने वाले provisions मिलेंगे आपको constitution में. Do check it and keep that in mind that he is not merely a rubber stamp. I agree that the discretion is very limited in nature.
That's why our constitution framers have also used the words like a nominal figurehead and all. But this does not mean that he does not have any powers at all, and he is just acting as a rubber stamp. So he is not acting as a rubber stamp. I would end on this particular note with this particular video. For all such kind of videos and conceptual clarity, don't forget to subscribe. ये सब आपको 50% faster prepare करने में help करेगा. I'm very sure about that. So don't forget to subscribe. Stay updated with such beneficial videos. Thank you everybody.